Good morning, students. Welcome on the session of 9th May. And you know my habit, whenever I come to teach you, that time always I just tell what we had learned in previous previous lecture. So in the previous session, we had learned clinical thermometer and laboratory thermometer, that you know very well. Alright. After thermometer session, in this chapter we are going to see transfer of heat. Heat will transfer. Chapter heading is only heat, right? So what is heat? We saw that. But what is the transfer of heat? Means heat also will transfer from one end to another end. From one place to another end, heat will transfer. So transfer of heat, first of all, if we see the example, whenever you are frying pakoda, right? You are frying pakoda, so with that, first of all, what you do? You take frying pan, utensil, vessel, whatever you say so. In that you pour oil and then you keep on the stove or induction, right? So without that, can you fry? No, you will have to heat the oil, and when oil will be heated, then and then only you can fry the pakoda or whatever you are going to make. So for that you need to keep the frying pan on the gas stove or induction. So that stove flame will transfer heat to the frying pan, right? Suppose stove है, उसके ऊपर frying pan है, तो यहाँ पे stove का जो flame होगा, that flame heat will transfer from flame to the frying pan. Then and then only oil will get heated, right? So for that, heat will transfer from one place to another place. Then and then only we can come up with another new result. Means we can get our result or our product. Like here I was talking about pakoda. So like that process done. After that, that oil you have done with all frying pakodas and that all. After that, that frying pan you are taking and you are keeping on the floor or you are keeping on your dining table. So after that, heat will remain the same as it was in the oil. Heat will remain the same. जैसे कि मतलब जितना oil गर्म था उतना ही same रहेगा नहीं. After that, slowly oil will cool down and heat will become deducted or decrease. क्यों? Because it came in the contact of surrounding. तभी उसको heat नहीं मिल रही है, flame नहीं मिल रही है. So flame will not transfer heat and it will not transfer heat. तो अभी क्या है? Surrounding के बीच में frying pan है. So now frying pan has relationship between surrounding. पहले flame के साथ relation था, फिर बाद में surrounding के साथ, right? So in that surrounding temperature is lower and that frying temperature is higher. तो क्या होगा? Higher से lower में जाएगा. मतलब वो जो frying pan का जो temperature है, that temperature or that heat will transfer to the surrounding, right? That's why क्या होगा कि heat transfer होती रहती है. Flame से pan में आई, pan से surrounding में गई, right? So that heat is transferring. But कहाँ से कहाँ transfer होगी? Cool to heat में transfer होगी. Cool to heat में transfer होगा तो क्या होगा? Hot object will become more and more hotter. But no, from hotter object to colder object. Suppose कि हमारे पास चाय है कप में. So क्या होगा कि जब तक चाय गर्म है तब तक कप गर्म रहेगा. After that, whenever tea will become cold in the normal temperature. कैसे? Because वेदर का टेम्परेचर है, that टेम्परेचर किसके साथ कनेक्शन करेगा? चाय के साथ. तो चाय धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, तो कप भी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा. सो हॉटर टू कोल्डर, मतलब कि हीट है वो फ्यूम से बाहर निकलती है. चाय गरम होती है तो ऊपर आपने देखा होगा फॉग जैसा या फिर फ्यूम जैसा होगा. दैट फ्यूम इज कमिंग आउट. मीन्स दैट हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू colder object. Here we are taking surrounding or weather. So frying pan becomes hot because it passes flame to the pan. Over there what will happen? Passes flame. अभी heat क्या होगा? Heat will passes to the flame to the pan. Flame to pan. When frying pan is removed from the flame, अभी flame से frying pan को remove कर दिया, it cools down because heat transfer from the pan to surrounding. I already discussed. I already explained. Another one activity is there, activity 4.6. In that हम देखेंगे कि heat transfer पहले solid में देखेंगे, then we will see in liquid and then we will see in gas. Okay? Transfer of heat में we will see about liquid. First one we will see transfer of heat in solid, liquid, then gas. ये तीन में देखने वाले हैं. तो पहले लिक्विड की सॉलिड की बात करें, सो दिस
दिस इज रोड, ओके, रोड ऑफ एनी मेटल, कोई भी मेटल है उसका रोड है, मतलब वो सॉलिड ही होगा, ऑब्वियसली यू कैन सी हियर इट्स सॉलिड। इस उसके ऊपर यहाँ पे मैंने क्या स्टिक किया है, वैक्स स्टिक किया है, ओके, नॉर्मल जो वैक्स आता है वो वैक्स को स्टिक किया है। आफ्टर दैट आई विल कीप हियर candle flame, and that candle flame will transfer heat from the flame to this rod, and rod is here, यहाँ पे एक स्टैंड है कि ये रोड को कैसे रखेंगे कि नीचे एक ब्रिक रख दो, ऊपर एक ब्रिक रख दो, तो उसके अंदर में रोड रह जाएगा, ऐसे स्टैंड नहीं है तो यू कैन यूज ब्रिक ऑल्सो, स्टैंड अवेलेबल, देन यूज दैट बेटर, सो दैट दिस फ्रॉम दिस फ्लेम heat will transfer to the rod, and from the rod hotter object to older object, so this one is hotter, so here what will happen, wax are sticked over there, so धीरे धीरे पहले यहाँ का वैक्स नीचे गिरेगा कि यहाँ का वैक्स नीचे गिरेगा, I have clearly mentioned here, I have clearly drawn here that first of all the wax situated or be stuck, this area will start falling down or falling apart, wax situated here, why, because पहले हीट यहाँ पे मिलेगी, तो हीट कैसे ट्रांसफर होगी, ऐसे होगी कि ऐसे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, मेरा ये हुआ ना, मेरा राइट टू लेफ्ट हुआ, सो फ्रॉम हियर टू हियर आई हैव गिवन एरो, व्हाई, बिकॉज फर्स्ट वन हीट विल ट्रांसफर हियर देन हियर, तो क्या होगा, यहाँ पे हॉटर ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर ये हॉटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हीट ट्रांसफर करेगा, ये गर्म हो जाएगा, आफ्टर दैट इट विल ट्रांसफर हीट फ्रॉम हियर टू हियर, मींस हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, आ रहा है समझ में, पहले ये गर्म होगा फिर ये गर्म होगा, पहले डायरेक्टली यहाँ पे गर्म नहीं होगा। आपके फ्राइंग पैन है तो फ्राइंग पैन का नीचे का जो बेस होता है, फ्राइंग पैन का पहले जो बेस होता है वो गर्म होता है, फिर बाद में ये साइड में गर्म होता है, सो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्लेम है ना, फ्लेम यहाँ पे है, इंडक्शन हमारा है या फिर गैस है, तो सो हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन। सॉलिड में जो ट्रांसफर हीट होता है ना वो कंडक्शन, ये सॉलिड है, आई एम गिविंग एग्जांपल एज एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम द एक्सरसाइज, दैट इज दिस ओनली, the process by which heat is transferred, the process, this is one process by which heat, यहाँ पे ये heat है, heat is transferred from the hotter end to the colder end, hotter end to the colder end of an object is known as conduction of an object, कोई भी object है hotter end to colder end, अभी यहाँ पे रखा होगा तो ये hotter end बन जाता, यहाँ पे हमने flame रखी है, candle flame, then this one will become first hotter end, so hotter end to colder end of the object is known as conduction, and generally this process occurs in solid, or solid heat, in the solid heat is transferred by this process, ये प्रोसेस किस में एप्लीकेबल है, इन द सॉलिड, जनरली इन द सॉलिड वी कैन सी दिस, सपोज एक रोड है तो रोड को आप फ्लेम के ऊपर रखो तो क्या होगा, पहले वो हॉटर एंड होगा फिर बाद में आपके हाथ तक पहुंचेगा, राइट, सपोज स्पून है, स्पून यू आर कीपिंग इन एनी वेसल, और फिर बाद में पानी गर्म करने रखते हो तो स्पून धीरे धीरे गर्म होती है, पहले स्पून का जो माउथ होगा दैट विल बिकम हॉट, एंड फ्रॉम दैट टू हैंडल, फिर बाद में आप हैंडल टच करोगे देन इट विल बिकम हॉट, यू कांट होल्ड इट डायरेक्टली, that's why we are not keeping spoon in the utensil, we are keeping outside, so that hotter end to colder end heat will transfer, this process is known as conduction, and generally conduction occurs in the solid object. Now what a conduction किस में होगा, कंडक्टर में होगा पर इंसुलेटर में नहीं होगा। नाउ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, अभी ये भाई कहाँ से आया, आप बोलोगे मैडम तो मतलब क्या क्या लेके आते हो, बट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आई थिंक सो यू हैव लर्नड, am I right? You have learned conductors and insulator. Conduction होता है कंडक्टर में, अभी कंडक्टर बस वाला कंडक्टर, no, बस वाला कंडक्टर नहीं, कंडक्टर्स मीन्स द मेटल who can transfer heat and electricity, who allows to transfer heat and electricity from one end to another end. अभी इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास करूँ और यहाँ आएगी, यहाँ पे मैं करंट देती हूँ, ये मार्कर पेन है मेड अप ऑफ फाइबर और प्लास्टिक व्हाटएवर, सो यहाँ पे मैं करंट देती हूँ, यहाँ पे करंट आएगा नहीं आएगा, सो ये क्या हुआ, कंडक्टर हुआ कि इंसुलेटर, व्हाई, बिकॉज ये इंसुलेटर है, बिकॉज इट डजंट अलाउ ट्रांसफर हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, जो अलाउ नहीं करता वो इंसुलेटर है, जो अलाउ करता है वो कंडक्टर है। सपोज इफ आई टेक एनी काइंड ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम मेटल, कोई भी मेटल है तो मेटल में हीट ट्रांसफर होगी, यस, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी, यस, देन दे आर कंडक्टर, बट इंसुलेटर प्लास्टिक है, right, plastic is one type of insulator, after that many examples, rubber में heat और electricity transfer होती है नहीं, so that rubber is one type of insulator,
because it doesn't allow transfer heat from one end to another end. Now you will take one beaker, in that you will pour hot water and you will put steel scale. तो steel scale गर्म होगी, yes, because it is made up of metal. But plastic scale, no. Pencil, no. Plastic pen, no. तो ये सब क्या है कि scale है, plastic scale, pencil, plastic pen, these all are insulator. Eraser, rubber, insulator. If heat will transfer from the hot water to that particular your things, like पेंसिल है, मेटल है, मेटल स्केल है, प्लास्टिक स्केल है, तो प्लास्टिक स्केल में हीट ट्रांसफर होगी, नो, so that is insulator. And if heat will transfer, if that object will become hot, then that will be conductor. Okay, so steel scale है वो conductor है, but plastic scale, that is insulator. Why? Because it doesn't allow transfer heat from one end to another end. And generally insulator and conductor, so insulator होगा वो transfer heat नहीं होगा, उसमें conduction नहीं होगा, but conductors के अंदर conduction होगा. Same है ना, similar. Conductors can follow the process of conduction. Understood? Conduction we saw. Now convection. Radiation I will explain you in our next period. Convection first of all, because conduction, convection both are together. Radiation is separate. Okay, so conduction, convection I am explaining together. Conduction, you know, hotter end to colder end, and generally it occurs in solid, and especially in the conductors, not in insulator. Insulator मतलब heat and electricity pass नहीं होती, conductor मतलब होती है. Okay, transfer of heat in that solid we saw, in that conduction. Liquid, liquid में क्या होगा, convection. So convection, first of all, when we pass heat, or when we give heat, cold water from the side. सपोज ये मेरे पास कोई भी यूटेंसिल है, तो कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन, मतलब ऊपर का जो कोल्ड वाटर ऊपर ही होगा ना, ऑब्वियसली गर्म होगा तो पहले नीचे का गर्म, पहले पानी ऊपर का गर्म होता है कि नीचे का गर्म होता है ना, तो ऊपर का कोल्ड वाटर होगा. सो कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन, कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन, and hot water from the middle rises up. Hot water from the middle rises up and cold water from the side moves down. मतलब in short, cold water होगा वो यूटेंसिल होगा ना, उसके साइड में से नीचे आएगा, और हॉट वाटर होगा ना, वो मिडल में से ऊपर आएगा. ये एक प्रोसेस है. अभी ये क्यों है वो तो भगवान को पता है, बट ये जनरली ऐसा होता है. Scientifically it's proven also. You can do experiment at home also. I will tell you afterwards. Process continues till whole water gets heated. आप चाय को गर्म करते हो तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है नीचे ऊपर होने की, कि ऊपर का जो दूध होगा, ठंडा दूध, वो साइड में से नीचे जाएगा, और आपके जो झाग ऊपर आती है ना, फॉर्म ऊपर आता है, पता है, वो मिडल में से आता है, आपने देखा होगा, तो ऐसे मिडल में से ऊपर आता है, तो ये वो गर्म होता है. गर्म दूध वैसे ऊपर मिडल में से आता है, ठंडा दूध कॉर्नर से नीचे जाता है. फ्रॉम द साइड इट गोज डाउन एंड हॉट वाटर फ्रॉम द मिडल राइजेस अप, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल whole water gets heated. This process of transferring heat, अभी ये process है, transferring heat is known as convection. One activity is given over there. In that you will take one beaker, you will fix in tripod, and you will give heat. Okay, you will fill with 3/4 container of water. क्या ऐड करोगे? पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट is one type of liquid solution. जब आप गार्गलिंग करते हो, गला खराब होता है, तो आपको पर्पल कलर का लिक्विड सोल्यूशन देते हैं. दैट इज वन टाइप ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. तो पोटेशियम परमैंगनेट यू विल ऐड. अभी ऐड करोगे तो वो पहले नीचे जाएगा, ऑब्वियसली नीचे जाएगा. फिर क्या होगा कि नीचे जब हम फ्लेम देंगे तो ऊपर का पानी पहले गर्म होगा कि नीचे का? ऑब्वियसली नीचे का. ऊपर का थोड़ी गर्म होगा, धीरे धीरे जाएगा, हॉटर एंड टू कोल्डर एंड. तो यहाँ हॉटर एंड टू कोल्डर एंड. और पर्टिकुलरली पोटेशियम परमैंगनेट का वायोलेट कलर होता है. सो वायोलेट कलर विल गोज अप. बट हाउ? हॉट वाटर फ्रॉम द मिडल, मीन्स यहाँ का जो वाटर है फ्रॉम द मिडल इट विल गो. तो आपको कलर यहाँ पे दिखेगा कि वो मिडल से ऊपर जा रहा है, इसीलिए हमने ऐड किया है. व्हाई वी हैव एडेड पोटेशियम परमैंगनेट? विदाउट दैट वी कांट सी. बट वाटर हैज नो कलर, वाटर इज कलरलेस. सो हाउ यू विल ऑब्जर्व दैट हाउ वाटर इज राइजिंग अप एंड हाउ वाटर इज मूविंग डाउन? That's why to check the direction and to check the place of water, that from where it is going down, from where it is moving upside, for that only we have added potassium permanganate. So potassium permanganate will rise up from the middle and that water will come down from the side. So इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा है HM, मतलब hot water from the middle, और cold water मतलब ऊपर का water from the side, मतलब ऊपर का साइड में से आएगा, और hot water from the middle will go up.
हॉट वाटर मिडल से ऊपर जाएगा और कोल्ड वाटर साइड में से नीचे आएगा. Understood? So this is short key and this is about convection, and generally convection process occurs in the liquid. Solid में conduction, liquid में convection, and for gases radiation. Radiation मतलब sun के जो radiation आते हैं वो गैस में आते हैं. Environment में क्या है, weather में क्या है, गैस है. So that is radiation. आइडिया थोड़ा तो क्लियर हुआ ना कि रेडिएशन क्या है. एंड सॉरी, आज मैं कुछ भी कॉमेडी नहीं करवा सकी बिकॉज माई हेल्थ इज नॉट वेल. सो you just, if you really understood the video, leave the comment in comment section, like my video, subscribe my channel, and keep watching, keep doing your work, and stay tuned with me. Till there, take care of yourself.